महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देता है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है और देन भी एक है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते, फर्क दिली से देते। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। जानते हो ना क्या, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये आवाज अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्रह्मांड आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में ये दोनों शब्द निकल जाना चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब में अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी कि सदा हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा है, सर्व गुण सदा है। आप सबके भगत जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं, बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द का सदा सर्वशक्तिवान, कभी शक्तिवान कभी सर्वशक्तिवान नहीं। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर कॉपी में नोट करते, याद भी करते। लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं
बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते खुश होते। बहुत अच्छा वरदान है, वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वो वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना, कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, वो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे।
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव। अव्यक्ति इशारे। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अब दिलाराम बच्ची का अभ्यास पॉइंट है परम मित्र, खुदा दोस्त। दूसरों का कल्याण करते करते हम स्वयं घाटे में चले जाते हैं। जिस बात की धारणा हमारे जीवन में नहीं है, उसकी शिक्षा दूसरों को देने से आत्मा थकती है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी मौज में हो। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे संगम युग मौजों का युग है। तो मौज बनाना क्या होता है? कई समझते हैं खा लो पी लो, खेल लो, वो मौज है नहीं। पर हमें पता है कि मौज क्या होती है। पर फिर भी हर एक को अपने जीवन में क्या हम सदा खुश रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा प्रेम प्यार संबंध व्यवहार में रहता है, तो फिर मौज है। बार बार अगर किसी बात में अपसेट होते हैं, कोई टेंशन होता है, तो मौज चली जाती है। ये स्मृति समय की कि हम संगम युग पर हैं। छोटा युग है, सबसे सुहावना युग है। सब युगों से ज्यादा संगम युग, क्योंकि एक संगम युग ही है जहाँ पर जिसको हम पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। और हमें श्रेष्ठ कर्म करने का दो बालकाल जीवन के, एक शारीरिक रूप से बालकाल, दूसरा रूहानी युग से। 2 बार पढ़ने को चांस मिलता है। पहले लौकिक रूप की पढ़ाई की, अब अलौकिक पढ़ाई करते हैं। तो जैसे जीवन में एक और चांस मिलता है हर एक चीज का, जो लौकिक में नहीं कर पाए वो अभी हम कर पाते हैं। लौकिक में भी यही संकल्प रहता है कि सब संतुष्ट रहें, सब खुश हों, मैं भी खुश हूँ।
परंतु प्रैक्टिकल में नहीं होता है। एक स्वरूप बनना प्रेम का, खुशी का, हर्षित मुख। हमारे बाबा थे, सदा हर्षितता। मुझे तो बाबा की दो बातें, हर्षित मुख, दूसरा मधुरता। हर्षित मुख और मधुरता, तो ये दोनों गुण जो है ना, जो अंदर ही अंदर समझता है कि बाबा के बच्चे हैं, विजयी बने हैं, विजयी रतन हैं हम, संतुष्ट बने हैं। बार बार जो बाबा हम बच्चों के प्रति कहते हैं, बार बार उसकी स्मृति लाने से खुशी बहुत होती है। ऐसे भी देखो ना, विचार तो चलते ही हैं, आप बंद नहीं कर सकते। पर बाबा के बनने के बाद ज्ञान का जो मंथन चलता है, जो विचार चलते हैं सेवा के। आज मैं सोच रही थी कि एक भोजन होता है, एक एक्सरसाइज होती है, दोनों जरूरी है ना। तो ज्ञान हमारा भोजन है और अभ्यास करना हमारी एक्सरसाइज है। सिर्फ भोजन करो, एक्सरसाइज नहीं करो, और सिर्फ एक्सरसाइज करते रहो और भोजन नहीं खाओ तो कैसे होगा नहीं। तो ज्ञान का मनन चिंतन हमारा भोजन है, और दिन भर जो भिन्न भिन्न स्थितियों का अभ्यास है वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है जैसे। तो इसलिए बाबा के सभी बच्चों को बाबा कई तरह का होमवर्क देते हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करो। तो लिस्ट बनाओ किस किन बातों से मुक्ति मिली है। एक बाहरी रूप से स्वभाव, संस्कार, आदतें, कई बार कई तरह की आदतें थी, चाहे बोलने में, चाहे व्यवहार में। अब हम अपने स्वधर्म में रहते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, और सबको सम्मान भी देते हैं। तो बहुत बंधन थे। जैसे कहते हैं ना, जेल में फंसे हुए थे। ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, वैर भी था, बार बार आवेश में आना, कई तरह की। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करो। तो बाबा कहते हैं कि जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। कोई कोई, हाँ, जैसे एक बंधन लगता है, और हम बाबा के बच्चे जो हैं, उस संबंध में हर एक चीज से हमारा संबंध है। भोजन खाते हैं, शरीर की आवश्यकता है, आत्मा बाबा की याद में भोजन बनाती भी है और भोजन खाते भी हैं। तो हर चीज में एक सुख होता है, अच्छा लगता है। पहले जो कुछ करते थे मजबूरी से करेंगे, राइट। अभी जो कुछ करते हैं वो बहुत रुचि से करते हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ के लिए कर रहे हैं, तो खुशी तो रहती है ना उसकी। तो जीवन मुक्ति क्या है, सभी थोड़ा इस पर विचार करेंगे कि जीवन बंधन के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है, कंट्रास्ट होता है ना। बाबा कहते हैं वहां पर, कहाँ पर जीवन मुक्त जब है, वहां तो जीवन बंधन की बात ही नहीं है।
वहां तो सिर्फ उसकी प्रारब्ध में होंगे। कई तो प्रारब्ध के इंतजार कर रहे हैं, पर अभी जो वर्षा मिला हुआ है, सत्युग आएगा तो ये होगा, सत्युग आएगा। बाबा कहता है यहाँ भी सत्युग बना के रह सकते हो। मधुबन में लोग आते हैं, अनुभव पूछते हैं, बोलते हैं तो स्वर्ग है। सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है, प्रेम का व्यवहार मिलता है, स्वागत होता है। सबसे बड़ा सुख संबंधों का होता है। बचपन में ही माँ बाप से जो मिलता है, फिर टीचर, सदगुरु। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। मुक्ति निर्वाण धाम है, साइलेंस है, आत्माएं। हाँ, कुछ बेशक हम यहाँ कहते हैं हमारा घर है, पर वहां ये संकल्प तो नहीं होगा ना मैं घर पे हूँ। यहाँ हमें पता है कि हम परम धाम जाएंगे, पर जब हम परम धाम में हैं तो कोई भी भान जैसे कि है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो भी कर सकते हो वे वहां नहीं कर सकते। इसलिए संगम युग पर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। जब वाणी से पढ़े यहाँ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साइलेंस का बल है, साइलेंस की शक्ति है। जीवन मुक्ति जैसे हमारा व्यवहार हो, थोड़ा डिटेल में हर एक सोचे और लिखो क्या क्या है मुक्ति, क्या क्या है जीवन मुक्ति में क्या है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि वहां के आप वर्षे के अधिकारी हो, यहाँ पर वर्षा है और वहां पर पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो बार बार अपने को स्मृति दिलाओ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। बहुत दिन से ये चल रहा है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। अभी संगम युग का थोड़ा समय है। जब मुक्ति, जीवन मुक्ति का लक्ष्य रखेंगे ना तो बंधन से भी मुक्त होते जाएंगे। लक्ष्य रखो, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, तो अब सामने जो बंधन आएगा खुद को लगेगा नहीं ये बंधन मेरे को नहीं चाहिए अभी। विकारों का तो नहीं रहा, कर्मों का है थोड़ा बहुत। तो जैसे एक आत्मा को ये अनुभव रहे सारा समय कि मैं मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, सबका अनुभव हो। और सतयुग में क्या क्या है, वहां तो देखो शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, कोई को किसी से डर नहीं। यहाँ भी हम बाबा के बच्चे हैं। एक समय ऐसा होता था, सब दादी हैं, पहले पांडव भवन में, फिर सब जगह
भोजन करती थी दादी साथ में बैठ के। जो भी कभी ब्रह्मा भोजन होता था तो सतयुग में भी ऐसे ही होगा, राइट? तो इसलिए अभी कुछ मिनटों के लिए बैठते हैं, विचार करेंगे कि मेरा वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी तारीख है 11 मई 1977। संपन्न स्वरूप की निशानी शुभ चिंतन और शुभ चिंतक जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है। उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते।
कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो, उसका साधन सुनाया, आदि काल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होंगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम बस नहीं आएगा। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाए। ओ मधुबन वाले बाबा। सभी को कि बराबर डॉक्टर तुम्हारा भी किया था बहुतों का, परंतु इनका जो नाम है डॉक्टर के एक बदल नहीं सकते हैं कभी। ये बदल सकते हैं नहीं, ये भाग सकते हैं भला? आशीर्वाद सुरंती कठंती भागंती हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी साथ है एकदम। तो अभी सभी बच्चे जहां भी है वो ये जरूर जानते हैं कि हमारा बाप और दादा है, और हम बाबा से इन्हों द्वारा वर्षा भी लेते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं कि वो हमारा लौकिक बाप ही यहाँ है, ऐसे नहीं कहते कि नहीं है। कोई कहे कोई करता है, फिर भी तो कहेंगे तो सही कि हमारा लौकिक बाबा भी है, और फिर परलौकिक भी है, और ये अलौकिक भी है। अभी ऐसा कोई भी नहीं कहेंगे कि हमको 3 बाप है, ऐसा कोई होगा ही ना, कोई तो बुद्धि नहीं होगा, ऐसा की बात है। और तुम बता सकते हो जो भी हो गए उनको कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, यानी ये भी होके गया है। अच्छा, लौकिक बाप भी तो बहुत ही मिलते आए हैं, अभी भी है। बाकी जो पहले के बाप है वो अभी मिला हुआ है, और वो मिला हुआ है हमको ये जो ड्रामा का प्लान है उनसे अनुसार। तो ड्रामा का अर्थर तो कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होती है तो फिर उनको ड्रामा जरूर कहेंगे, और रिपीट भी एक्यूरेट करती है। ड्रामा भी तो एक्यूरेट रिपीट करते हैं ना बच्चे, तो यह बहन का ड्रामा सो तो और ही एक्यूरेट होगा। प्राणों के प्राण है हम पर तेरे बड़े एहसान, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया।
Om Shanti. In this Avyakt month, stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. Experience liberation and liberation in life. It is only by experiencing bondage in life that you can experience liberation in life. There in the golden age, there is no question of bondage in life. There you will just be in the state of your reward. You will not be able to experience the liberation of the land of liberation that you experience now. Therefore, you can experience liberation and liberation in life at this confluence age. You have claimed a right to your inheritance, so now inculcate that into your life and take the full benefit of it. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 27. In this Avyakt month, stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. Today's topic: experience liberation and liberation in life. Dilaram Bhatti, point for practice: God the friend, Khuda dost. While benefiting others, they caused themselves a loss. Giving what you don't like drains you. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. Everyone is okay, happy. Never gets disheartened, right? It's a very beautiful experience to think of God's friend. God is my friend and I am God's friend. Right? When I came to Baba and first time when I met Brahma Baba, in Brahma Baba at that time was 83 years old. But as soon as I met, like he was very like a good friend, you know. After, of course, father, teacher, Sadguru, that's after getting knowledge. But he was so relaxed, so much like, you know, talking to me as a friend, wanted to know about what I study, what's my aim. And it's like very normal conversation. Generally, you expect when you're meeting a spiritual leader that they will talk about many higher things and big things. And so I always found that as a God,
He was very human, not like, oh, I have superpowers or I am I am almighty, or very human. And that's what really touch, whether they are young people, children, or older people. Lot of many souls say that when they came to center and that time, we never used to have chairs, right, in classroom, carpet. So they sit on the floor and we sat with them. So that humility and respect for others also is many, many souls give reference of that. When I went to Madhuban in History Hall, now there are sofas on the sides, but that time Baba Mama will sit. They had square cushions on the floor, not very thick one. Both Baba and Mama will come and sit there, and we will, as a group, or because during Baba's time, Baba used to say, "You are gardener. Where is your bouquet?" So it never happened that you go alone. There was always a good group. Per year, new students, those who have spiritually taken birth, they all will go to meet Baba. 20, 30, 15, depends. So we all will go together in the train and then meet Baba. And Baba will give lovely drishti and then start talking about our travel. And so confluence is the age of experiencing everything. And one of our inheritance, Baba says, is of liberation and liberation in life. Mukti and Jivan Mukti. Even we have heard these words, this is our inheritance. But today, what Baba is saying, experience that, your inheritance. How quickly I make myself free. Is it from sorrow or concern or past and anything? So since I read this, I am thinking more and more that we need to look at ourselves at confluence age. We know what were bondages before. It was always some habit, some sanskar, some people's opinion, or so many things. And we are liberated, completely free from all that. And now, because there is comparison of what is bondage in life, we can wake up whatever time we want. Before we had restriction for everything. Now it's just Baba, whatever is Baba Shrimat, we just follow that. So contrast is there. So that's what Baba is saying, that experience liberation and liberation in life. It is only by experiencing bondage in that you can experience liberation in life. It's the contrast, right? Baba is saying that now you have contrast. Baba says there in the golden age,
there is no question of bondage in life. Baba said, there you will just be in the state of your reward, fruition. Here we know effort and then we see the reward. And we enjoy both, right? But we have to kind of assess, I'm making good efforts, what reward I am getting, what is my liberation from. We use word realization, now we have to use word, now I am free from that. I am free from this, So Baba is saying that there you will just be in the state of your reward. You will not be able to experience the liberation of the liberation and liberation in life. Liberation and liberation in life. Baba says, that you will, liberation and liberation in life is that you experience now. So therefore, you can experience liberation and liberation in life at this confluence stage. You have, Baba says, claimed a right to your inheritance. So now, inculcate that into your life. Because when you get inheritance, some really know how to live the life after getting inheritance, and some don't. It is all right, let's keep it, put it in saving. There are some I know, they had been working Lord, then they said, no, why we have to work that much? And do something charitable, elevated. But some they don't know, right? So that's what Baba meant, that inculcate that into your life and take full benefit of what you're receiving now. So tomorrow Amrit Vela, everyone just sit and go in depth of that experience of what is liberation and liberation in life. So interesting. Every day Baba, a signal helps us to take a practice for Amrit Vela. And this practice of creating this experience, having the thought, this is my inheritance, and look at yourself, try to create that experience of liberation and liberation in life. So you will have experience of Paramdham and also of Golden Age. Because thinking about both is like invocation. You bring that in your life and you feel you are there also. As I am thinking, I could feel that definitely is going to be a beautiful experience at Amrit Vela tomorrow. And if we all everywhere, all of us collectively do that, that also could be something, as if we are all together in liberation, as we will be
and in golden age. We are at home together, we are liberation in life together, eternal relationship, right? As Baba said, whole cycle we were together. And at confluence age we are together. So again, definitely we will be together in golden age. So create that experience tomorrow morning, intoxication of my inheritance. Om Shanti. हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आजाद करे। सारे भारतवर्ष में और विश्व में जहाँ भी हमारे एम्बेसडर्स रहते हैं और भारत वाले रहते हैं, सभी इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 देश में इस समय पर सेवा कर रहे हैं। उन सभी को भी हम भारतवासी भी याद कर रहे हैं और हमारी बहनें भी आज वहाँ गणतंत्र दिवस को याद कर रहे हैं। हे मानव जो अपने मन पर तू स्वराज करे, कमजोरी की गुलामी से खुद को आजाद करे। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी है, जिसको हमें पानी है, यही सच्ची आजादी है। Om Shanti. Om Shanti. Om Didi. Shanti body man. Om Shanti. That was a little surprise. Just, We thought too. In Madhuban they celebrate. I was there last time, and in that big lawn, and yeah, those were like local forces, you know. yeah, they get to be served. I was thinking, I think it's on this day. Some years ago, I watched some of it where the president takes a salute from all of the armed forces, the Navy, the Air Force, the military. And I was thinking, watching her, you know, as she was taking the salute, she was really giving them drishti. Mhm. It was our And she's standing all the time, yeah, quite a long time. quite a long time. Yeah. So It's very interesting that they show military, then they show, but in the end, it's all cultural, no floats. mhm. Very every state and dancing, and so they say that, you know, culture of India. So many states, every state has different dress, Mhm. different language, different every- food, different colors. Yeah. It's really quite a vast. So seeing, you know, the army, I suppose part of their remit would be that they are protecting, that they're protectors. And part of what
they all assume they're protecting, is freedom, you know? So when I think of this thing of liberation, I always think free, very simply, that every living thing, you know, whether it's a plant or an animal or a human being, they want that freedom to express themselves. And so when you would have come to Baba, then, you know, you were a young woman. And so you certainly wouldn't have had any consciousness that you were in any kind of bondage or that you needed liberation in life, right? There are always social bondages, no? That's the thing. That's the thing. Social bondage. Yeah, yeah, And that's a big one. they have set things like it should happen like that. Yeah, Girls should be like this. yeah, You know, it's like lot of social bondages. And yeah, when we come to Baba, then we break all them. No? yeah. And so that many of the things that, as you say, that we have broken, that never mind the golden age, we even stop being aware of them in the confluence age. You know, the various things that Baba has made us free from, they're just part of our culture now, part of our life. We don't even think about it. As soon as girl is born, parents start thinking now we have to accumulate dowry. Oh, So, yeah, and we have to keep money for education of boys and dowry for girls. So really they kind of earn and then they plan but that's a big thing also, right? And that is why there is whole thing now about save the daughter and educate the daughter is main thing in India. right. That otherwise, as soon as they hear daughter is born, lot of people don't want that, you know. So they treat different. They will treat daughters different, sons different. But now daughters are also so educated and make so much money, and so it's not that much. But before, even Yeah, education, why and you part, have to, why you have to study when you have to go and cook and only take yeah. care of household? That was the attitude. And so that has changed the culture too, because of girls being educated, they don't marry so quickly, you know, so they're much later, they're more mature Yeah. when and if they decide to get married or to have children. So it is changing the culture as well, you No, know. before they feel that before 18, 19, girls should be married. So I asked them why. They say because when she has children, she can be like child. But if you are big and then have children, you can't play with children. I mean, that's the logic they give. That's the logic. Plus, yeah, adjustment in the new family. Say easier when you are young. When you are grown up, then. But these days, both are educated. Both are, even women work. Everyone works now. Yeah. It's different culture completely. On this thing also of, you know, that in the golden age, you not only will you not have any bondage, but you won't be aware that you're living a life free from bondage. And I guess the opposite is the Iron Age. Everyone's in a life of bondage, but they're not even necessarily aware that they're in bondage. Right? Yeah. Yeah. But the Baba is saying that we have contrast That we of have. what is bondage, and I definitely think when I start coming to Gyan, so many bondages, so many bondages. So many And things. then once you just get yourself free, completely different life. Yeah. And, you know, you were saying earlier about the highest form of happiness is in relationships. And I guess the opposite is true too. There's a line from a poem that is the well
from which our joy rises is often filled with our tears. And so maybe some would even say, as we've heard Baba mention in the Murli, that you never considered you had any bondage in terms of relationships until you became a Brahmin, and then, you know, some difficulties in relationships, etc. Daddy Janki always used to emphasize a lot on relationship. Mm-hmm. And she used to say, closeness in relationship is the joy of life. Okay. समीप के संबंध सुख देते हैं. That means when you are, you know, understand each other, you are close, then there is a lot of joy Yes. in that, you know. But you can see sometimes why people want to go off and become sannyasis. Because of maybe the pain or the disappointment in relationships or whatever else. So there is never really a time, even though we say you go alone and you come alone, you don't really, because when you come, there has to be a mother there. So there's really never a time when it's just you and you alone. You're always with other people. The whole cycle. What about going alone? Yeah. Well, mostly you'll have people around you if you've been halfway decent. But yeah, we know that the soul ultimately is by itself. But soul doesn't feel lonely, no? No. It's only when soul is in the body. Yeah. Then we need company, relationship. And yeah. And so that's one of the tests. And something that came up yesterday where Baba was talking about contentment. And part of the thing of contentment was, you know, I think it's connected with being the authority of experience, but that it means that you see life as entertaining, that everything's a cartoon. And I wanted to ask you how to do that in your situation where you have to be very serious. You're dealing with very serious matters, and how at the same time to be entertaining. And then just one small thing. It's a long time since I've heard you tell a joke, Didi. You used to tell a lot of jokes. You used to enjoy when people would tell jokes. And I haven't seen you do that in a while. So how do you balance this whole thing of the seriousness of the task and yet being entertaining? Ask Bhumi Ben. Anything I say, she said, oh, what a joke. What a joke. That sounds like sarcasm, actually. I think that, you know, all those who are around us and doing everything, karma yoga, and it is important to be light, you know. Yeah. Laughter is one thing, but lighter. Laughter we have enough here. Okay. When they are together, young ones, they really laugh. I can hear it 2 floors up, you know. So laughter is there, but cheerfulness, you know, always be cheerful. And so I feel that happiness is something which doesn't make you feel the burden of anything. It's like when you are happy, you don't feel how much things have to be done, or you don't feel difficulties. But if you are not happy, then everything is like burden, you know. But all, you know, Yeah. where you were saying about Brahma Baba and that you saw him as a friend, and do you like to be seen as a friend at this stage in your life is one thing, but where sometimes as an instrument, you may have a friendly nature, but sometimes people take it for granted and they cross a line where familiarity comes into the picture. They think of you as a friend, but something is missing in terms of regard or respect or whatever. So how do you keep that accurate, that you're not encouraging others to be
disrespectful, even whilst being friendly? I think self-respect is very important, Always. because when you are in self-respect, people don't want cross boundary, Okay. in the sense of, and also whenever you are very light and everyone is in light mood, we don't forget our maryadas, in the sense of, because, I don't remember who said it, that, yeah, Didi Manmohini used to say that when you follow the rules, regulation, there is always benefit, So in the sense that if I am, until now I find so many years in Yagya, but I think that people make jokes and all that, but they never try to be intimate or try to be, Yes. yeah, Yes. very, I don't know, it's because that inner seriousness is there about your Mm-hmm. purpose of life. Mm-hmm. So Yeah. externally, of course, you are, because of your lightness, Yes. then it's humor. And, Brahma Baba also, when we used to go to Madhuban, they used to think how to entertain us, right? So when April 1st came, generally we don't remember or celebrate, but there, Yes. okay, they will say it's a very nice rubbery, Yeah. but in that there was cotton Oh. in the milk, not rubbery. Or they will say, okay, have these pistachio, and they were wood pistachio, from the wood. Yeah. Yeah. They make it in India. So Yeah. it's just like to make you laugh. And Yes. I've seen that. they I was had surprised. Yeah. one of the sister, Dadi, at that time had a spider, but of rubber. So when they throw at you or they put in the bed, and rubber just jumps, you jump high, and they all laugh. So they, Ah. little kind of things they will do. Because I think the joy, playing, Yes. entertainment, all that is part of life, no? Yeah. And it's a childlike humor. It's not like Mm. Yeah. vulgar. It's not vulgar. Other, otherwise, it's the heaviness, and Mm. even your own personality could be very heavy. Yeah. So I think cheerfulness is important. So just one historical question, and that is Baba's room. In when did there start to be Baba's rooms in centers? When Baba became awake, Okay. and after that, one was meditation room, and then start we kind of wanted to have drishti, and also a room where we can be with Baba only. So then everywhere, wherever it was possible, they will make Baba's room so that we can go and sit. People also, I think, but also it's a kind of sacredness, because when people go, it's just like a temple is there. You go to Mm-hmm. Baba's room, it's a sacred space, Yes. powerful vibration. In classroom, even if Baba's picture is there, it's not same. It's not the same, no. And there was a time, there was a separate room for new students, then was Murli class, and then was Yes. Baba's room also. So today, like, it's very same because of space maybe, or, Yeah. but I know that we always had classroom, course room, right? Right. Or And the we won't, visitors' room, they would yeah. So call it. new students won't go in Murli room. I think just to maintain vibrations. Mm-hmm. Yeah. Okay. So that's it. That's was my Mm. historical question. Thank you. Yeah. Okay, Thank you, okay, Didi. Okay. okay. Om Very Shanti. well. Om Shanti. Mhm.
Om Shanti, thank you. And so tomorrow is Tuesday and our schedule from Amritwela, 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Then we'll continue with the whole day Patti, 5 to 6 p.m. English Avik Muli revision. Together with that in breakout room 5 to 5:30 p.m. Avikti Chatur Muli class. Then we'll continue with the Bhatti and Hindi series, English series, and chit chat. Now, let's remember Baba and take Drishti from Didi. मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के, ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते ओ वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे, अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा।
वन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति मोहिनी दीदी, थैंक यू दीदी। शांति मोहिनी दीदी। शांति दीदी। शांति दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू अव्यक्ति परिवार। ओम शांति बाबा, थैंक यू शांति। शांति दीदी, ओम शांति। In this Avyakt month, stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. Experience liberation and liberation in life. It is only by experiencing bondage in life that you can experience liberation in life. There in the golden age, there is no question of bondage in life. There you will just be in the state of your reward. You will not be able to experience the liberation of the land of liberation that you experience now. Therefore, you can experience liberation and liberation in life at this confluence age. You have claimed a right to your inheritance. So now, inculcate that into your life and take the full benefit of it. इस अव्यक्ति मास में बंधन